very much, Tafasa. And let me just, Dr. Athar is already here. Let me just announce the topic he's gonna discuss. At the moment, it's how job market has changed during COVID and what can we learn from it. Thank you. I'll start with ये मसला है कि डिस्कस करना किससे ये बात कर रहे हैं बैकग्राउंड इन्होंने कहा कि डॉक्टर से डिस्कस तो करेंगे लेकिन अब हाँ आप लोग हैं मैं तो टीचर हूँ मेरा काम ही रोज क्लास में जाता हूँ स्टूडेंट से पूछता हूँ तुम बताओ 1.5-2 घंटे निकल आता हूँ 20 मिनट ये करूँगा अनफॉर्चुनेटली हमारा पैनल है really good people represented this panel. This was job market after COVID. और अतन सुबह से इस पे बात तो काफी हो चुकी है, लेकिन जो participants हैं उन्होंने काफी specific questions throw किए थे to discuss. So obviously I don't work in the industry, so I do not really know what's happening on the other side in terms of how jobs have changed. So I'm going to engage all of you. So that means that despite post lunch, no allowances for sleeping. And you have to be alert and active. हम लोगों को कभी-कभी मौका मिलता है कि इंडस्ट्री वालों में इस तरह बात कर सके हम बैकवर्ड ग्रोथ है. So how much time do we have? 25 minutes. बहुत ज़्यादा है. Okay, make it 20. हाँ. So 5 मिनट तो मैंने आपके लिए दिया. हाँ. So हम ये देखना चाह रहे हैं. So we are not talking about work from home. We are not talking about क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. हम ये देखना चाह रहे हैं कि has the nature of jobs changed in COVID? So for example, are there any new kinds of jobs that have emerged that were not used to exist before? For example, I have been thinking that would HR would now have a WFH manager. वर्क फ्रॉम होम का सर कोर मैनेजर होगा. ठीक है, इस तरह से कोई नई जॉब्स हैं. कुछ जॉब्स इफेक्ट हुई थी सप्लाई चेन की, जैसे चॉइस नहीं थी आपके पास वर्क करने की. सप्लाई चेन ग्लोबली सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है क्योंकि काम आप नहीं कर सकते थे, लोगों को आपने चीज़ें भी मुहैया करनी थी, लोगों ने ज़रूरत भी पूरी करनी थी. So has their contract employment changed? Were they able to negotiate the money better? Were the type of jobs where the monetary value increased and were the type of jobs where the monetary value came down? मैं भी थ्रो करूँ सारे आइडियाज बताने आप लोगों को, ठीक है? और कोई इशू इसके अलावा आपके माइंड में तो आप जा सकते हैं. This is open forum. Similarly, has the gender balance kind of improved because हमारे पास एक है whatever you call it culture religious जो भी आप कह रहे हैं that not all female population get permission to work. They don't want to send them out. So now because of the work from home, क्या ज़्यादा labor force participation employment force में female workers की बढ़ गई because they were offered more jobs and retain them better और acceptance rate उनका शायद बढ़ गया हो. So क्या इस किस्म में कुछ trends हम देख रहे हैं इस सेशन के अंदर. Similarly एक पैनल में किसी ने पूछा था अजंतवीर साहब ने कि क्या कोविड की वजह से because there were both trends. कुछ कंपनी से जो एम्प्लॉय ब्रांडिंग कर रही थी कि देखो हमने किसी को भी ले ऑफ नहीं किया, डाउनसाइज नहीं किया, इट शोज अवर कमिटमेंट टू पीपल. There are obviously cost pressures and companies had to lay off. So क्या कोई जो एक जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय लेने का, वो कुछ तो जैसे जफर साहब के सुबह के लर्निंग और ग्रोथ इन चीज़ों पर बेस होता है that I work for you, मैं आपको सर्विसेज में रिटर्न दे रहा हूँ but it's your responsibility also to look after. But now has that become most like cost benefit analysis? क्या इस बंदे को रखेंगे तो ठीक है काम करता रहेगा, इसको पैसों में ज़्यादा ज़रूरत है. So has that become more transactional in nature for example? So over to you guys कि कुछ चीज़ें मैंने बोली कि एक तो एक क्या ट्रांजैक्शन हो गई है, क्या ज़्यादा लेन देन हो गई है एज अपोज टू ग्रोथ ओरिएंटेड टैलेंट मैनेजमेंट. हम एक नॉर्मल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, नॉट सेइंग लार्जली जो हमारा सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं. दूसरा क्या आर देयर न्यू काइंड ऑफ जॉब्स दैट वी सी दैट वर नॉट देयर बिफोर? Did COVID open up a certain new employment market for maybe gender or disability etc.? So how do you see the outcome? So anybody volunteers and can be start. Regarding work from home, in Pakistan, almost every software development house roll out the work from home policy and deploy all employees and they are working from home. एक तो वो हो गया उनके पेरोल पे एम्प्लॉइज हो गए.
अब उन एम्प्लॉइज ने वर्क फ्रॉम होम का फायदा क्या किया? 2 से 3 फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स और ले ली हैं। एक तो रेगुलर पेरोल से सैलरी आ रही है और रिमोट जॉब से भी अलग जो है सैलरी कमा रहे हैं। So they are damaging the market. That's the challenge which IT companies. Yeah. How are they challenging the market? I mean, उनके perspective से they have been able to increase income, which media argument would do. But at this point of time, every company is going towards digitization. So they are giving good money, good salaries, good compensation. But जब ये चीजें normalize होंगी, जब ये कोविड खत्म होगा इंशाल्लाह, उसके बाद they will see. जितनी मार्केट ये डैमेज हो चुकी है अभी कॉम्पनसेशन वाइज, एक्सटर्नल इक्विटी वाइज। अच्छा, आप कह रहे हैं कि larger payroll compensation and benefits plan होगा फोर्सी। So you don't agree in that sense with Suhail Zindani's assertion that COVID हो या ना हो expose करके हमें चला गया reality की कि हमें job पे होने की जरूरत नहीं है, काम हमें travel करने की। बिल्कुल बिल्कुल। So you think the situation would actually normalize and then it is going to imbalance the pay structures? Yes, yes. Regarding the new jobs, I'm sorry if anybody else would Yeah, like to one- comment. First, So regarding the new jobs that we see after COVID, particularly, I mean, the social media manager, we see after the COVID, now too many companies are hiring on this position. So this is the, one job opportunity that we see. Another we see like these e-commerce and e-businesses, like we see Daraz, Food Pandas, and these Baikia, this business go well after the entrepreneurship का COVID. जो trend है, it has kind of moved towards Q-commerce, split commerce आप कहते हैं, और ज़्यादा retail की side में move कर गया है because deliveries became a challenge in COVID. So if the companies like Airlift then quickly moved from a transportation commerce To commodity तो वहाँ पे ऐसे supply. आप सही कहते हैं लेकिन उसका skill set बड़ा niche है. This is where universities need to respond because analytics की जो field है बड़ी niche है. So you may be seeing more jobs, at least बंदा masters हो. But you are seeing that people from LUMS, NUST and maybe GIK. ये 3 schools के थे जो सिर्फ computer science किया हुआ है. So I think उसके अंदर having a consistent supply of good talent is going to become an eventual challenge. जी, somebody was. So, I feel that there's absolutely no such thing at this point in time where we can say इस चीज़ के लिए सिर्फ अवाइड नहीं है. Everything comes with pros and cons. But with COVID and then when we realized that regional difference is actually not a difference per se, we have also exposure to a certain sector of the labor market or potential pool that weren't initially available. Like for example, a lot of working women with younger toddlers and infants who were initially uncomfortable in being available at work, so they had to leave their office, their career and move to a different route. Now they are mostly available and they can be easily working through work from home. Similarly, there are students as well who, virtually they can attend their classes, but they can also be, contributing to the. So you are saying the mobility segment introduced? Introduce हो गया. Does this make retention more difficult? Because that means that anybody is anytime, अगर ये जो हम जैसा सुबह बात कर रहे थे, और मुझे भी कुछ और HR से बोला कि job sharing आ जाएगा, आप Unilever में काम कर रहे हैं, आप need less. So is it going to impact the quality of work? Because I think the reason you also employment is because जब आप delivery कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब माशाल्लाह जितना मैं अभी इनसे पूछने वाला था कि जिस रेगुलरली ब्रांच मैनेजरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल. So there is also something in industries like advertising, for example, आप एक client relation बनाना चाहते हैं. You want to see the same face view. There is a body you want to interact with because you are developing a long-term relationship. So is that going to become? Is this going to pose new kind of challenges? The first पहली बात तो ये है कि ये जैसे पार्ट टाइम है वन ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट टाइम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज ए रेगुलर जॉब, इसकी पॉसिबिलिटी आई सी लेस because there is obviously going to be a conflict of interest in one point in time. Whatever services I am rendering to company A and similar services to company B, there is a competitive disadvantage or the client interest. So I don't really see it's going to be flourishing in that sense. But what I see, and you were, mashallah, what I'm learning is about the gig economy, where people are, I miss Suhail Zindani's morning session, unfortunately.
where the gig economy that is appearing is doing away with the concept of a conventional job. Because understanding is that nobody, no talented resource is 100% optimally utilized in an organization. So whatever work, assignment, job description is given, it only has X number of hours per day value added. So if these resources come in the gig economy environment, and you sort of outsource the set of responsibilities, outsource a certain set of activities, so that is cost effective, that is more attractive to these talented individuals, and we see it happening in some form of computer programming outsourcing and some of these financial outsourcing. But I see there is a great shift coming to the concept of employment per se. And that's something that needs to be studied. Unfortunately, we don't have much research in Pakistan. We discovered in the first one. And also, I request करने लगा था कि please इसमें कुछ initiate करें. I think you will be adding great value to our industry. I feel that gig economy में ये depend करेगा कि पाकिस्तान में terms of export अगर उसका national agenda देखें कि किस quality, किस value added चीज में contribute करें. Absolutely. So I was having this argument with our top management that हम gig economy की तरफ चले जाएं, हम बिल्कुल conventional चीजें ना पढ़ाएं. I am a bit of an old school in some sense कि मैंने कहा कि देखें you also need to see कि आप attract किस pool को करें. Now that is not an excuse of not doing the new things, but सवेरे जिंदानी पे आने में बात कही थी कि भाई वो उन्होंने एक जोक सुनाया आप लोग थे कि वो एक पैरेट और एक अरब जो है वो लड़े होते हैं तो आँख में दोनों को निकाल देते हैं. तो पैरेट जब मरता है तो शेर मर जाता तो पैरेट ने कहा मैं इसलिए छोड़ा रहा था कि बहुत मरते. तो वो हम जो भी होगा अपनी औकात के हिसाब से करेंगे. But the fact is that when I talk to students and they tell in the evening class कि हम जल्दी जाना है because मेरी client के साथ meeting ठीक है और हम एक काम में काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे. So काम वो वही कर रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं डिजिटल किसी का मीडिया मैनेज कर रहे हैं. But they're not like the top quality jobs जो आप बोलें कि हाँ इंडिया के IT करनी होगी इसको. But then that's an education problem as well and that's also a skill set problem. यार gig economy में क्या पोजीशन अपनी करेंगे. Unfortunately काफी सारे हमारे लोग जो gig economy में काम कर रहे हैं बेसिकली वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चों का असाइनमेंट कर रहे हैं. जैसे people go and post assignments कि ये प्रोजेक्ट है जैसे कि ऐसे देख रहे हैं वो आगे किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है वहाँ पे सबमिट कर रहा है क्योंकि वो भी वहाँ पे दूसरी जॉब कर रहा है. So you don't also have to get a cognizant कि ये ना हो कि उस टेम्पररी शॉर्ट टर्म कुछ पैसों के लिए our future generation loses a more relevant skill set जो ये सब कह भी रहे कि शायद इतना लॉन्ग टर्म में नहीं देखने के लिए बिल्कुल एक वो पहले बता दें कि जॉब्स का टॉप है माइनॉरिटी होगी जो कर रही होगी बट यू आल्सो नो हाउ टू बेसिक जो स्किल है वो तो जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए. जितनी एक्टिविटीज हैं जितने प्रोसेसेस हैं वो सब अपनी जगह पे कायम है. The human value addition part of it, whether as a dedicated resource or a resource which can pick up a segment of that activity and provide excellence in that. So that's the main part of it. Dr. Sahab, very thoughtful discussion. Thank you so much for having this. Just one question यहाँ आया मेरा, if I'm allowed to ask question as well. Sure. जो हमारा in this market we see the visiting faculty at university A. B हम देखते हैं जो private hospitals में शाम में या morning में OPDs के doctors आते हैं. So ये जो working model है क्या इसको हम gig economy के साथ relate कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये तो हमेशा से exist करता था. But gig economy is more like something that is happening in the virtual space or happening in a small space in the private sphere. जैसे आप cafe culture है. ठीक है इस टाइप की चीजें हैं. आप कह सकते हैं कि आप gigs लगा रहे हैं एक दिन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं दूसरे दिन दूसरे में पढ़ा रहे हैं तीसरे दिन तीसरे में पढ़ा रहे हैं. इसलिए तो इतनी content differentiation नहीं देखते आप. You know, apart from few institutes, every student sees the same. That they talk the same, example the same, because there is not enough onus on them to develop their own exposure. Because they are all getting an exposure from a single source. अच्छा सर मैं अहमद साहब से पूछना चाहूँगा कि इस कोविड के दौरान do you see any shift in terms of the employer-employee negotiation process? Like was it transactional? अब के ज़्यादा पैसों की are people playing more on the family card and halal? Is there a new kind of context in terms of how the interviewing or the talent pooling is taking place?
So there was a shift, if we talk of, let's say, Q2 of 2020 when COVID was at its peak, and there was a lot of uncertainty in the market. A lot of people were either losing jobs or were in the fear of losing jobs. And I was looking at the statistics yesterday. So globally, from 4%, the unemployment rate shot up to 14%. Between from January, let's say December of 19 till April of 20. And then by December of 21, it has again come back to the vicinity of 4%. So पिछले 1.5 साल में इस तरह से dynamic change हुई है. So उस वक्त it had become more of a employer market, I would say. जो आप अभी बात कर रहे थे कि the relationships we felt were more transactional. Because there was uncertainty on both sides, so people were very skeptical, they were very fearful कि जी जॉब चली जाएगी या पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे. And in that sense, which I don't think is a very positive thing to do in terms when you talk of employers, and I know some good profiles who refused good offers because they said they are trying to take advantage of the situation, and I don't want to kind of undersell myself because one day it will be over. So there were people who took a stance, and they, I think, rightly did so, and they did not let the employers take the wrong advantage. But that was the situation, and that at that time especially it had become more transactional. And from an employer perspective also, they were looking at short-term fixes. ठीक है, अगर आते हैं 1 साल के लिए, इन्हें भी ज़रूरत है, हमारा भी काम निकल जाएगा और फिर देखेंगे आगे क्या होता है. But now I think as people, another thing that I respectfully disagree, I don't think the pandemic is going to be over. I think it will now be a part of our lives, and we have to learn to live with it and manage it. So ये dynamic तो चलेगी, उसकी अगर हम ये expect कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन आएगी और फिर हम सब बिल्कुल इससे बच जाएंगे, वो नहीं होगा. अभी भी आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन के बावजूद we are still getting cases. So that's a different perspective. So once we learn to live with this dynamic, it will become the new normal, as we have been talking about it. And in the new normal, as I said, since the unemployment rate has come down, including in Pakistan, the market is now at a point where there is kind of a balance between what we call an employer's market and an employee's market. So there is a lot of talent influx in Pakistan over the last 1.5 years. A lot of people coming back from North America, Canada, Australia, Middle East. So there is a huge quantity, surplus, good quality talent available. The jobs are also going up. But you see that the talent that's coming back has an expectation that since they are coming back from all these developed markets, they will be readily absorbed, and companies will kind of be trying to race with each other to get them. That's not the situation, unfortunately, and since we talk to a lot of employers, they still are preferring to go with people with local experience. So even if you have a very strong IT exposure in some advanced technology company, people are still finding it difficult to get the right role of their liking and preference in Pakistan, because the employers still think that people who have had exposure in the local market are better suited for those roles. So there is a disconnect. But now we are coming to a point where we'll have a good balance very soon, because now people are realizing that this is not going to go away. They have to kind of be adaptable to the changing market dynamics, and I think the employers are also realizing this. So it is the balance. Hopefully, we'll be seeing that in the coming months. I think the role of the HR function is also sort of changed a little bit since after COVID, because the HR function was sort of used to being the policeman
So time in, time out, that sort of a thing, right? And now it's having to adapt itself to things like work from home, flexibility, trying to be more empathetic, and things like that. So I think the HR function itself is also evolving. And also there's another, we're talking about moonlighting and sort of job sharing. I know at least one recent startup globally, which is called Job Role Share, which helps people do multiple jobs at the same time. So are we being consciously empathetic? Is that a trend that you see? Like, I mean, are you seeing that or just talking about it? Like, when you are in your jobs, when you meet people and they come that, don't lay me off or higher circumstances or I couldn't do because I was not well, are we saying, okay, fine, that's okay, but, what's the case? Yes, we do experience this. So you do experience conscious empathy? Yes. So you are saying that on a humanistic level things are getting better? Yes. And also the employee well-being programs now, there is a shift like from the organizations now, they also focus on, employee well-beings in terms of... Is there going to be any shift in the physical space in terms of how offices will be designed and because I read to people now say, okay, आधे लोगों ने घर पे काम करना है, we don't need so much rental space. Are people going to move from this trend of flagship house offices? This kind of move, Dr. Sir, I feel is more considered culturally amongst us in the fact that any company को क्या bad times आ गए थे, they've gone into a smaller space. So I feel people are not as mindful of the fact that they शायद से इसीलिए कर रहे हैं या वे लोग work from home कर रहे हैं. I feel which is why most of the companies would not really want to move at that avenue because it just gives that silent, invisible message to the board fraternity saying, oh, what happened to them? Maybe they've had huge losses or maybe. So it's kind of a negative perspective. So it is symbolic and it's going to really get a wrong signal. And then probably they are going to think of operational costs and Exactly. So like after this discussion and it's a kind of radical question and thought I'm sure. We often hear this, and this is from my perspective, that academia or industry में बहुत gap है, and I'm kind of tired of this discussion. लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ कि अगर ये इतना starking है, अगर ये इतना clear cut है कि जी universities don't prepare people for graduates, तो employer pressure और relevance वाला भी नहीं है. मतलब what if you didn't hire the business graduates or university degrees. मतलब कुछ universities को आप छोड़ दें, लेकिन अगर largely हमें कहते हैं कि नहीं जी ये तो universities don't prepare people for the real world, as corporates like to say, and why don't we just make a radical shift? And the reason I'm bringing this conversation is कि कल मैं एक साहब के साथ तो जो अपना PhD thesis पे मुझे discussion कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अथर साहब मैं सोचता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, मैं 4 साल में इनको पढ़ाते हैं और जो रियल वैल्यू है इंसान का और जो कैरी और सेल्फ पर्सनैलिटी सॉफ्ट स्किल्स वो तो सर डिग्री में शायद कहीं कैप्चर ही नहीं होते होते हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसने कहा कि अगर हम ये इनको इंटर के बाद 6 महीने का 8 महीने का 10 महीने का बूट कैंप करा दें 3-4 हफ्ते के जो फंक्शन नॉलेज कोर्सेज है मार्केटिंग HR ऑपरेशंस ये करा दें सॉलिड किस्म के हैवी किस्म के बूट कैंप की तरह दिन रात लगा के और फिर उनको 3-4 स्ट्रॉन्ग वर्कशॉप पर्सनैलिटी और लीडरशिप EI वगैरह करा दें तो वुड दे बी इक्वली रेडी विद द 4 साल मतलब अगर हम हर तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं जी यूनिवर्सिटीज डोंट डू अ गुड जॉब एंड देयर इज ऑलवेज अ गैप एंड दे आर नॉट रेडी सो व्हाई डोंट वी जस्ट मेक अ रेडिकल move and make myself unemployed but that's recommended जी perspective is that कि हम लोग ये दुनिया की universities is supposed to be an incubating element that I feel is mostly something that's happening. A university is a space that's supposed to be that incubation. जो कि आप जैसे इतने अच्छे teachers हैं all along and this is what we've seen over the years. I feel it's instead of thinking this way around, we rather try to shift the paradigm otherwise and try to bring institutions together to feel that institutions किस तरह से इसको embrace कर सकते हैं, probably life skills within their curriculum, probably all of the other essentials. ये gap तो I feel is बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत
सालों से हम सुन रहे हैं The reason, वो खत्म नहीं हो रहा है. I think the institutions have to this embrace is the reason I said is कि institutions can embrace किया है. We have done a big program on this. Even all universities भी कर रहे हैं. But I somehow felt that हम कुछ भी कर लेना फिर भी एक comment आपको सुनने को मिलेगा. Because जो बंदा जॉब पे चला जाता है, he is progressing at a faster rate than the academic members. It's a time problem. And टेंशन इंसान की होता है कि जब बंदा पहुंच जाता है तो अपना टाइम भूल जाता है. खुद भी जब किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला होता है, खुद भी इसी माइंडसेट के साथ निकला होता है. So it's that once you start working, you see the challenges that you cannot relate, and then you suddenly start feeling कि आप बड़ा करते हैं. So I mean, one way is fine. We bridge this gap. Like we have been doing अपने project कर रहा हूँ, सबके साथ discussion चल रही होती है, and we bring that knowledge to classroom. But you're right that it's not happening as a collaborative mechanism. Universities मिलके ये काम नहीं करें because universities खुद बड़े silos में चल रही होती हैं. But when you think about the disruptions internationally and Coursera and Excel or जो platforms आ रहे हैं, I don't know how employers see those certificates on the CV, but eventually it might come up with a time where we just do not exist, and they will have a short span of time, and because parents will also realize it. कल मेरी बात हो रही थी यही पे एक बैठे उसके साथ कि अगर मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दूँ बच्चों के स्कूल की पढ़ाई या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का, इसमें 50-60 लाख रुपए over 4-5 years, and then you have to work about 8-9 साल 10 साल if you are lucky to get a good job to recover that money. So what people eventually say, okay, fine, enough is enough, let's crash the system, let's do something else. So that's a ठीक observation sir. Actually, I want to learn from you. I am very happy to learn. आप इस पे गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं और इसको जो perception है एकेडमिया का और इंडस्ट्री के जो थोड़ी सी और जो वाइड है उसमें Habib University, I have learned very basic about it because my ex-on came and goes there Parvez Bayal and he keeps on sharing something on phone. I must confess, कोई तरह मैं internalize नहीं कर पाया. But I'm sure, professor आपने देखा होगा, उनके जो concept है वो कोई different है और वो differently does it because he's saying we are not focusing so much on technical kind of developing a human being who is adaptive, who is intelligent and who has ability because जो technical चीजें हम जाकर सीखते हैं ऑफिस में जो पॉलिसी मैनुअल्स एंड प्रोसीजर वो जो कहते हैं वो सीखी जाती है. तो ये कुछ इसका थोड़ा सा क्या है Habib has consciously positioned itself as a liberal arts university. Exactly. As a liberal arts university. as a what? As a liberal arts university. Liberal arts. और उनके पास जो लोग हैं वो भी उसी मिजाज के हैं. I know because I worked in this field before. कुछ लोगों के साथ मैंने काम किया अपने non-academic jobs. So उनका एक मिजाज है. Although they're very solid engineering students, but वो कहने का हमारा main मकसद ये नहीं है. I think there are a couple of things. If you have a strong group supporting it and the endowments are there, then you can produce better jobs. But वो product जो है उनकी is it going to add same value, better value or less value to the industry? I can't say. I don't know कहाँ पे क्या कर रहे हैं, but the batch is graduated. Few courses to write scholarships मिली हैं. They have gone on to study abroad. But हमारे पास मसला ये रहा है that people have because लोगों की ना कुछ अपने stereotypical perceptions हैं. The moment जैसे हम liberal arts पढ़ाएंगे लोग तो पता नहीं क्या करना है. So that's the problem. यानी वो हालांकि liberal arts में आप क्या करते हैं? Sociology पढ़ते हैं, philosophy पढ़ते हैं, psychology पढ़ते हैं और इस किस्म की कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ें पढ़ें या बस मतलब लोगों का ख्याल है क्या होगा? इंडस्ट्री के लिए तो बड़ा होना यूनिवर्सिटी का तो सब काम ही है ना. मकसद तो यही था कि तालीम की तरबियत थी तो एक एक्सपेक्ट तो जब ट्राई टू ब्रिंग दैट बैक. अच्छा हम लोग भी कर रहे हैं, हमसे भी होता है, एआई के लिए भी होता है, बट ऑब्वियसली एक काम एक चीज के लिए बनता है वो भी डिलीवर करना होता है. सो अब जैसे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस स्किलेबिलिटी ले ये एट द एंड ऑफ द अगर कोई कंपनी बिस्किट बनाने के लिए बनी तो उसे बिस्किट बनाना है. सो यू कांट से कि हमें इंजीनियर्स बनाने हैं लेकिन हमने बड़ा जबरदस्त ह्यूमन बीइंग बना दिया लेकिन वीक इंजीनियर बना दिया. So वो भी नहीं हो सकता. So you know one has to be clear with the mind कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. So काफी जगह से सारे हादसे में. So I would like to differ a little bit this concept. Basically जो market का imbalance है universities के साथ हमारी एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि universities produce कर रही हैं लेकिन उस क्वालिटी के स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे. अकेडमिया उनको पढ़ा दिया जाता है 10 से कि उन्हें जॉब फाइंड करनी है, जॉब नहीं. उनका मेजर पर्सपेक्टिव यही होता है
बहुत सारे लोग इलेक्टिव्स में, मेजर्स में या ड्यूल मेजर्स में, मास्टर्स में अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह नौकरी फॉरन करी। इसके अंदर से सर्टन प्रॉब्लम ये आती है कि जो मार्केट लीडर्स हैं हमारे, या जो लोग एचआर फैटर्निटी से भी हैं, या जो लोग डिफरेंट कंपनीज को हेड कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक बेंचमार्क बना के बैठे होते हैं कि हमने टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की ग्रेड्स को पिक कर रहे हैं। या एक और फिनोमेना भी मार्केट के अंदर है कि जिस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई जिस पोजीशन पे होता है, मोस्टली वो उसकी इंक्लिनेशन अपनी यूनिवर्सिटी साइड पे होती है। हमारे यहाँ मिड ईयर और लो डाउन ईयर्स की यूनिवर्सिटीज से बिलीव में हम रेगुलर वहाँ पे जाते हैं। देयर आर पीपल जो मास्टर्स के लेवल्स पे होते हैं या जो सो कॉल्ड एक इंटीरियर से या इंडिया पंजाब से पीएचडी भी कर रहे होते हैं, लेकिन शायद उनको सिर्फ वेरी थोड़ी से पी भी नहीं पता। तो इट्स टाइम फॉर अस द प्रोफेशनल ऑफ द मार्केट, इट्स टाइम टू पे बैक दिस। जो आपने इस मुल्क में इस यूनिवर्सिटी से, अपने कंसोर्शियम से, अपने सीनियर से जो सीखा है, ये हमारा काम है कि अब हम उसको पे बैक करें। हम एज ए कंसोर्शियम वी शुड विजिट यूनिवर्सिटीज, उनकी काउंसलिंग हम लोग करें, उनको मार्केट की जो एग्जैक्ट मिररिंग है वो हमें दिखाने की जरूरत है। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है जो मार्केट में हमारे पास जब हम रिक्रूटमेंट्स करते हैं, हमारे पास जो प्रोफाइल्स आती हैं, लोग ये समझते हैं कि नए कपड़े पहन के आने से इंटरव्यू हो जाता है। जस्ट नीड टू बी नीट एंड क्लीन रादर देन कि अनप्रेस्ड एक जो तय आप खोलते हैं उसकी लकीर लगी भी सामने होती है। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में यूनिवर्सिटीज में भी नहीं दिए जा रहे, क्योंकि हम फोकस करते हैं कि हमने ये 3 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज यहाँ पर उठाना है। जरूरी नहीं है कि ये भी पर्सपेक्टिव मार्केट्स में है कि सेकंड और थर्ड ईयर की जो टॉप नॉच लड़के होते हैं या फिर कैंडिडेट्स होती हैं, वो क्या पता टॉप यूनिवर्सिटी की मिड ईयर लेकिन वो हमारी लीस्ट प्रायोरिटीज के ऊपर होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो गैप हमारे पास है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स वैलिड हैं। ये ऐसे में एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो है ना कि आप कोर्सेज वो लेते हैं या आप ये इट्स अ वेरी वेरी एमबीए दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम। ये जो सोच है ना कि मैं जॉब ढूंढने के लिए पढ़ता हूं, इट्स अ वेरी वेरी एमबीए, ठीक है। और इसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री है कि हाउ डिड वी कम अबाउट टू दिस पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई एमबीए इफ यू लुक एट इट डजंट हैव एनी डिसिप्लिन, इट डजंट हैव कोर फील्ड। मतलब आप इंजीनियरिंग करते हो, आपका तो किसी से एक्सपर्ट हो, आप डॉक्टरी पढ़ते हो, आप कहते हो मैं आई नो द ह्यूमन बॉडी। When you said MBA and you ask the person what do you know, and it's everything on planet Earth that you get it. So this is a very MBA problem. ये जो है ना कि मैं जॉब की सोच से एडमिशन लिया, this is a very business school. चलिए जी, आई थिंक इनफ, काफी हो गया, बहुत देख लिया आप लोगों का, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया मेरे साथ। So okay, so just to conclude, we discussed a lot of interesting ideas. Few things that we discussed. एक हमारा थोड़ा इसका इख्तिलाफ है कि क्या पैंडेमिक के बाद मार्केट नॉर्मल होगी या नहीं। कुछ लोग नॉर्मल होगी लेकिन खराब हो जाएगी। तो उबैर का ख्याल है कि कॉम्पनसेशन वाइज है कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ लोग नहीं पहुंच जाएंगे, फिर इक्विटी होगा, फिर एक रीबैलेंस होगा। अहमद ज़ियाद साहब का ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा मेडिसिन को समझते हो, मेडिकल साइंस समझते हो, जो वायरस होता है म्यूटेट होता है, वायरस जाके एंड नहीं होता, सो 0.0 आना मुश्किल है। सो इट्स प्रॉब्ली दैट वी हैव टू लिव विद इट, और कुछ एक नया बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन हाइब्रिड वर्क एंड फिजिकल वर्क। सो आई थिंक दैट इट लैंड्स इटसेल्फ टू सम अपॉर्चुनिटीज, कुछ गिग इकोनॉमी क्रिएट होगी, और आई थिंक उसके अंदर यू विल विद टाइम यू विल सी कि स्किल इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। सो रादर देन जस्ट डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग यू विल आल्सो सी पीपल डूइंग सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स यूजिंग द इकोनॉमी, पीपल डूइंग कंसल्टिंग यूजिंग द इकोनॉमी। So overall, if you think of the greater good of society, the disposable incomes will increase, and we are also dealing with about 14% inflation rate. So I think that's what, as a person, it's something you would want to, foresee. दूसरी हमने बात की क्या हमारी जो negotiation है employer मार्केट की, वो transaction हो गई है, जिसमें we got the input के एक temporal phase था, जब कोविड किक हुआ था और downsizing हो रही थी तो लोगों को fear था. So people were playing only on the money. But now it has normalized, and again we will see the equilibrium in the employment market. And the last thing that we discussed was the industry-academia relation, and I accept this point of view that this problem is of our own making, and only we can solve this problem. ठीक है, आखिर दवा Thank you, Dr.